Hello students, we are covering complex analysis for December 2026 नेट एग्जामिनेशन एंड हम PYQs कवर कर रहे हैं एंड टॉपिक वाइज PYQs हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कवर कर रहे हैं। सो योर फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। द फंक्शन f फ्रॉम c to c डिफाइंड बाई fz is equal to e to the power z plus e to the power minus z. We have to tell how many zeros this function has. Zeros का मतलब क्या होता है students? fz is equal to 0. z is a 0 of f, that means fz has to be equal to 0. So it means e to the power z plus e to the power minus z has to be 0, which means if I take e to the power z out, if I take e to the power, let's say minus z out, right, then this will be e to the power 2z plus 1 is equal to 0. So from here I can say that e to the power 2z plus 1 has to be 0. So which implies e to the power 2z is equal to minus 1. And always remember that e to the power theta is equal to minus 1. It implies cos theta. E to the power iota theta is equal to minus 1. It implies cos theta plus iota sin theta is equal to minus 1 using Euler's formula, which means minus 1 plus 0 iota लिख सकते हैं ना इसको, which means cos theta has to be minus 1, which means theta का वैल्यू क्या होगा, किन वैल्यूज़ के लिए cos theta minus 1 होता है, यू टेल मी। पाई के लिए होता है, 3 पाई के लिए होता है, 5 पाई के लिए होता है। सो इट इज़ 2n plus 1 पाई, odd value of odd multiples of pi. So here theta will be 2n plus 1 pi. So यहाँ पर it means 2z किसके इक्वल आ गया, 2n plus 1 pi, 2n plus 1 pi iota, because यहाँ iota नहीं है ना, so we have to take iota as well. ठीक है, सो इट इम्प्लाइज z इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, सॉरी हाँ n प्लस 1 बाई 2 पाई आयोटा. नाउ हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ n आर देयर. n क्या है, n किसी इंटीजर से बिलोंग करता है. इट कैन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन बी ए नेगेटिव इंटीजर. सो हियर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स. इसका मतलब है जैसे जैसे आप n पुट करते जाओगे यू विल कीप गेटिंग वैल्यूज़ ऑफ z. So there are infinitely many values of z. So the given function has infinitely many zeros. So D is the right answer here. All good. Next question. ये December 2017 का है. We are given that mode of, actually ये ना ये ऐसे है, mode of e to the power z is equal to 1. This is some typo error. For a complex number z is equal to x plus iota y. So which of the following is true? See, whenever you come across any such question जिसमें अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, देखो mod of e to the power iota theta is always equal to 1. You can find it using the Euler formula. If we find the mod of cos theta plus iota sin theta, then it will be 1 na, because this its modulus is equal to under root cos square theta plus sin square theta, so the value is equal to 1. It means this 1 can be written as mod of e to the power iota theta. I can write it like this. And if we compare the left hand side and the right hand side, we will get that e to the power z is equal to iota theta. Because the base is same, so power has to be same. It implies if I let z to be x plus iota y, then this is equal to iota theta, e to the power x plus iota y. So far हमें ये चीज़ पता चली है. इसमें आगे फर्दर थोड़ा सा इसको और ब्रेक कर सकते हैं. e to the power x into e to the power iota y is iota theta, which implies e to the power x into cos y plus iota sin y plus iota sin y is equal to iota theta. Understood? अब right hand side, this is an imaginary value. दिस इज़ एन इमेजिनरी वैल्यू, सो इट मीन्स जो रियल पार्ट है उसको ज़ीरो होना पड़ेगा, बिकॉज रियल इज़ इक्वेटेड टू रियल.
Imaginary part is equated to imaginary part. So from here I can conclude that e to the power cos y has to be 0, which implies या तो e to the power x 0 होगा या फिर cos y 0 होगा. See, e to the power x को 0 होने के लिए my x has to be minus infinite. But see, infinite or minus infinite are never included on the real line. We don't include it, है ना, क्योंकि ये फिक्स थोड़ी है. सो ये चीज़ हम लोग नेगेट करके चलते हैं. वी डोंट कंसिडर इट एज ए पॉसिबिलिटी. सो वी गोट कोस वाई एज इक्वल टू 0. अब कोसाइन कब 0 होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 or 3 pi by 2 or 5 pi by 2. So y has to be some odd multiple of pi by 2, where n belong to the set of integers. The set of integers positive either negative, है ना. सो इसमें आंसर क्या आ गया देखो एक बार. n पाई गलत हो गया, 2n plus 1 pi by 2 for some integer n बिल्कुल सही है. y is equal to, अच्छा देखो b और d में you should not be confused. You should not get confused between b and d. d में ये x का वैल्यू है, but we do not get the value of x here. We get the value of y here. So be attentive during the examination. Next है September 2022 का क्वेश्चन है ये. We are given a set H. H is a set which consists of all those complex numbers having their imaginary part positive. So it is basically the upper half plane. If I draw it now, then it is the upper half plane. H lies here. Understood? Okay. Here the function is defined as, fz is defined as, f is a function from c to c as e to the power iota z. F is a function from c to c. Which one of the following statements is true? See, first of all, let's break it. I can write z as x plus iota y. So this is equal to e to the power iota x minus y. We can write it as e to the power iota x into e to the power minus 5. Now we are given that imaginary z is greater than 0. It means y has to be greater than 0 because y is the imaginary part of z. It means minus y has to be less than 0. Minus y has to be less than 0. तो basically e to the power minus y क्या होता है? It is 1 upon e to the power y. Can I say that this is less than 1? Obviously, because exponential की वैल्यू होती है 2.17 something. और अगर आप e to the power y करते हो, y चाहे कोई भी नंबर हो, it is definitely greater than 2. 2 से बड़ा होगा. अब जब आप 1 पाई ई टू द पावर वाई करोगे तो ये 1 से तो कम ही रहेगा ना, बिकॉज द नंबर बिलो इज ग्रेटर देन 1. सो 1 पाई ई टू द पावर वाई इज लेस देन 1. क्वाइट क्लियर? सो नाउ इफ आई कंसिडर मोड ऑफ एफ जेड, सी हमें ना थोड़ा सा ऑप्शंस का भी ध्यान रखना है. ये क्या कह रहा है? एफ ऑफ एच इज इक्वल टू सी बाई 0. आई मीन टू से कि 0 डज नॉट बिलोंग टू द इमेज ऑफ एफ. 0 does not belong to the image of f. यही कहना चाहता है ना. बट एज y goes to infinite ना, as y goes to infinite fz will become 0. If y goes to infinite, then fz will become goes to 0. Understood? Now let's see the C option. FH is bounded. Bounded के लिए हमें we have to find the bounds of f. In order to find the bounds of f, I'll consider mode of fz. Mode of fz is equal to mod e to the power iota x e to the power minus y. That is equal to mod e to the power iota x into mod e to the power minus y. And you know that e to the power iota theta modulus is 1. So ये आ गया mod of e to the power minus y, and you can clearly see that this is less than 1. So it implies mod fz is less than 1. And you can see these are MCQs, not MSQs. इसमें एक ही single answer है. So C is the right answer. So it implies yes, FH is bounded.
सो गाइज देखो, वट एवर इज़ गिवन टू यू ना, प्रोसीड विद दैट, उसी के साथ हमें प्रोसीड करना होता है ना. यू लेट जेड टू बी एक्स प्लस आयोटा वाई एंड यू ब्रेक इट, देन you look at the options, you basically eliminate the options using any counter example or anything. You need to eliminate the option or you have to reach to the answer. Now next question, ये रोशेस थ्योरम पर बेस्ड है, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है. सो हाउ मैनी रूट्स डज द पॉलिनोमियल हैव इन द ओपन डिस्क. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द रीज़न दैट इज़ गिवन टू अस. कौन सा रीज़न हमें गिवन है. सो ये एक ओपन डिस्क है, जेड बिलोंग टू सी, मोड जेड इज़ लेस देन 1. दिस इज़ एन ओपन डिस्क है ना, मतलब यूनिट डिस्क है ये. मोड जेड लेस देन 1 इनसाइड ऑफ ए यूनिट डिस्क है ना. एक तरह से इफ आई प्लॉट इट देन जेड बिलोंग्स हियर. सो हमें बताना हाउ मैनी रूट्स डज दिस पॉलिनोमियल हैव इन दिस ओपन डिस्क. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ना आप जेड को पुट जेड इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में इन दिस फंक्शन. सो इफ आई पुट मोड जेड एज 1 देन मोड जेड टू द पावर 100 क्या हो जाएगा, इट इज़ 1. मोड ऑफ -50 जेड टू द पावर 30 क्या हो जाएगा, इट इज़ बेसिकली 50 बिकॉज मोड जेड इज़ 1 राइट. मोड 40 जेड टू द पावर 10 इज इक्वल टू like 40 mod z to the power 10 and that is equal to 40. Mod 6z is equal to just 6. Mod 1 is equal to 1. Now out of all these terms, which one is the largest term? You can clearly see 50 is the largest term. You need to see the coefficient which is bigger than the summation of all other coefficients. तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 1, यहाँ पर मुझे मिल रहा है 40, here it is 6, here it is 1, so plus 6 plus 1, what is this, isn't it 48? So 50 is greater than 48 now, so you first need to put mod z is equal to 1 in all the terms of the function, हर टर्म में पुट करना है, and then you have to look for the biggest coefficient, जो सबसे बड़ा coefficient है, which is bigger than द सम ऑफ द अदर कोफिशिएंट्स, बाकी सब के सम से भी बड़ा है वो है ना. तो इसका मतलब है यहाँ पर एक्चुअली रोशेस थ्योरम ये कहती है कि इफ़ आई एम एबल टू फाइंड ए फंक्शन जी जेड विच इज़ ग्रेटर देन द फंक्शन एफ जेड, देन नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जी जेड is equal to number of zeros of fz plus gz, ठीक है. here fz plus gz, let's say it is the pz which is the given function in the question. So you basically have to break the pz which is the given function जिसकी हमें number of zeros बतानी है. You break it into two functions fz plus gz and you break it in such a way that mod of gz is bigger than mod of fz. Understood? No confusion? Then we can say that number of zeros of pz is equal to number of zeros of gz. ठीक है. So यहाँ पर भी we will do the same thing. So which one will be gz? This 50, I mean 50 वाला टर्म कहाँ पर है, ये. So हम लोग क्या लेट करेंगे, we will let gz to be equal to -50 z to the power 30, the highest coefficient term, and we will let fz to be equal to the remaining function z to the power 100 plus 40 z to the power 10 plus 6 z plus 1. And we have already proven that mod of gz is bigger than mod of fz. So it implies number of zeros of fz plus gz is equal to number of zeros of g. And g has how many zeros? 30.
बिकॉज पावर ऑफ जेड इज़ 30. सो इसका मतलब है जो गिवन फंक्शन है मेरे पास उसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी इनसाइड दैट ओपन डिस्क आर 30. ठीक है. सो ऑप्शंस 100 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 30 इज द राइट आंसर. ऑल गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is February 2025 question.